Good morning to all my dear students and welcome to Zoology online class. In the previous class, I had completed up to the implantation of the blastocyst, and the formation of placenta Today, let me start, that is the gastrulation and the formation of three germ layer. Today, let me start the gastrulation and the formation of three germ layer. So, what is gastrulation? Gastrulation means that is the blastula, that is single layer blastula converts into a three layer gastrula. Converts into a three layer, that is into a three layer gastrula. The outer layer is called as the ectoderm, the middle is called as the mesoderm, and the inner is called as the endoderm. So that is, let me start, that is the gastrula. That is gastrula, and the process is called as the gastrulation. The gastrula and the process is called as gastrulation. The word gastrula and the gastrulation was coined by the scientist Ernest Haeckel. In the year of 1872. So that is immediately after the implantation. Immediately after, that is after 7 days, the implantation is occurred. Towards the 8th day, that is immediately after the implantation, the gastrulation is started, where the morphogenetic movement of the blastomeres takes place. And converts the single cell blastula into a that is three layer gastrula, and the process is called as the gastrulation. Are you understanding me or not? Gastrulation is a process by which, that is the blastomeres moves, or the morphogenetical movement of the blastomeres takes place, as a result of which the single layer embryo blastula converts into triple layer, that is glastula, that is consisting of outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. That means ये जो गुटिए लेयर सेल गुड़ा थिला सेमाने आस्ते आस्ते सजाई कि तीनटा लेयर रे परिणत हेबे आ तीनटा लेयर हे गले से तीनटा लेयर रु आस्ते आस्ते डिफरेंट ऑर्गन्स तयारी होबो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ता माने तीनटा लेयर जो तयारी हला एटा को पोजीशन ले तयारी हला ना इन द गेस्ट्रुला स्टेज रे आउ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गेस्ट्रुलेशन आउ एटा इमीडिएट हुए आउ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इज सो रैपिड, it is very difficult to separate there, it is very difficult to, that is the exact sequence, or to point out the exact sequence of the event. It is so rapid that it is very difficult to point out the exact sequence of the event. So anyway, this is at the beginning of the blastocyst. At first, the blastocyst comprises of two layers. One is the trophoblast, another is the embryoblast. By getting the food material, by the nourishment, the trophoblast divides and redivides and arranged into two layers. The inner small flattened cells or cuboidal cells are called as the hypoblast, and upper, this is the inner, and this is outer columnar cell, this is called as the epiblast. And both the layers is collectively called as the blastodisc. Then after, the cells which is present just above the, that is called as the cells of Robert. Then at this stage, what happens? Now, a cavity is formed just above the, that is the epiblast. This is called as the amniotic cavity, and which is filled with a fluid that is called as the amniotic fluid.
And the cell which is present above that, that is called as the amniogenic cell. Amniogenic cell. And that is the, this, it forms the roof, and the floor is formed by the, that is called as the epiblast. In this way, that is the cavity is formed, that is called as the amniotic cavity, and the fluid which is present inside it, it is called as the amniotic fluid. It is called as the amniotic fluid. Then the amniotic fluid. Then here the, after that, that is some of the cells from the trophoblast, they divides and redivides, and it appears in between, or in the, that is the, in the, that is the blastocell region, as the extra embryonic mesoderm. Extra embryonic mesoderm. And this extra embryonic mesoderm is differentiated into, this is extra embryonic mesoderm, is differentiated into two parts, that is outer, which is present just below the trophoblast, and it is inner, and this is called as the outer, that is planktopleuric mesoderm, and this is called as the inner syncytial trophoblast, that is called as the, that is called as the somatopleuric extra embryonic mesoderm, outside somatopleuric extra embryonic mesoderm, and inner is called as this planktopleuric extra embryonic mesoderm, and the cavity which is present inside that, that is called as the extra embryonic, that is coelom, extra embryonic coelom, which is developed, or the, this extra embryonic mesoderm develops from the trophoblast layer. So anyway, then you come to the first, the formation of the endoderm, the formation of the endoderm. So in this way, I have told you, first of all, the embryoblast divides and redivides to arrange in a two-layer cell. That is upper is, that is epiblast, lower is hypoblast, upper layer, upper that is epiblast or columnar cell, hypoblast or cuboidal cell, and then after a cavity is that is formed just above the epiblast, it is called as the amniotic cavity, which is filled with a fluid called as the amniotic fluid, and above that the cells which are present forms the roof of the, that is the trophoblast, it is called as the amniogenic cell. Then after, from at this condition, the trophoblast cell, that is divides, redivides to forms a mass of extra embryonic mesoderm, which differentiated into two parts. The outer is planktopleuric extra embryonic mesoderm, and that is inner is, that is this planktopleuric extra embryonic mesoderm, and that is the inner is called as the, outer is a somatopleuric extra embryonic mesoderm. Somatopleuric, outer is a somatopleuric extra embryonic, and inner is a planktopleuric extra embryonic mesoderm. Or it is parietal and it is visceral. It is parietal and it is visceral, like that. So not parietal, it is extra, that is it is called as the somatopleuric extra embryonic mesoderm. It is called as the planktopleuric extra embryonic mesoderm. Then you come to how the three germ layers are formed. At first, the endoderm is formed. How the endoderm is formed? According to some, that is the embryologist, that is the hypoderm or the hypoblast, that is the hypoblast forms the endoderm. So from the marginal layer of the hypoblast, cells divide and redivide, and it gradually, that is, develops just into the inner to the trophoblast, and they lastly they fuse to each other, and this is called as the endodermal tube, and this is called as the endodermal tube or endoderm tube. This is called as the endoderm tube, or it is in future it is called as the primitive gut. And from the, that is endoderm, that is the region which is just below the, that is the epiblast, it is just below the epiblast, it will forms the, that is the embryonic gut, and the rest amount of this, it will forms the yolk sac, it will forms the yolk sac. So
at first the yolk sac which is formed, it is called as the primary yolk sac because it is a large one. जो yolk sac टा प्रथमे तैयारी हो सेटा बड़टे हबो तेणु एटू जो हाइपोब्लास्ट जो डेवलप करी लास्ट रे मिसी गला सेटा को कुआ गला एंडोडर्म ट्यूब ए एंडोडर्म ट्यूब टा को कहंती प्रिमिटिव गट जो एंडोडर्म सेल गुड़ा जस्ट दैट इज एम्ब्रियो दैट इज द ब्लास्टोडिस्क तले थिला सेही रीजन टा हबो दैट इज द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म आउ जो रहिला रेस्ट टा एटा हबो यॉक सेक प्रथमे यॉक सेक टा बड़ हबो जेतले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दैट इज द मेसोडर्म डेवलप कला ए जो ट्रोफोब्लास्ट को तो हे जिवो सेटा तले आस्ते आस्ते श्रिंक करि जिवो सेटा हे जिवो सेकेंडरी यॉक सेक दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी यॉक सेक तो एमती एटा प्राइमरी यॉक सेक हला तापर हला सेकेंडरी यॉक सेक एमती दिस इज द दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म the formation of endoderm. So then the yolk sac actually the yolk sac does not contains any yolk in case of the human beings. It does not contains any yolk. It contains the fluid. In case of the reptiles and birds, it contains the yolk and that is the yolk sac secretes the digestive enzyme to digest the yolk and to that is the nutrient from that is the yolk and supply it to the developing embryo. But here amar to yolk nahi tenu eta gote ye thai kon na that is the fluid thai paravarti kala ra reduce hei jae au eta kete jana kohunti it also that is forms that is the blood cell up to the 6th week पर्यंत ये blood cell तैयारी करे किए ना यॉक सेक तापरे हमें जीवा कोड की ना फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म तो जतले एंडोडर्म चली गला ब्लास्टोडिस्क ध्यरु आउ जतिक सेल रहिला जतले तो after that is the separation of endoderm from that is the blastodisc region, the other cells which remains in the blastodisc, it is called as the embryonic disc. Embryonic disc divides and redivides. This is the embryonic disc, and this embryonic disc divides and redivides to forms a peculiar structure, and that structure is called as that structure is differentiated into 3 parts. That is called as the cephalic region, that is head region, that is called as the cephalic region. Then that is embryonic disc proper, that is called as the embryonic disc proper. Then it is called as the caudal region. This is cephalic region and this is embryonic disc proper, and this is called as the caudal region. And from that is the caudal region, that is some cells. I have forgotten to tell one thing, that is the embryoblast cell having the stem cell which can differentiate, divide and redivide and can convert into any other type of cell. That is your ectoderm, mesoderm, endoderm, etc. Clear? That is in the beginning, that is embryoblast having that is stem cell. The stem cell are the undifferentiated cell and they have the capacity to divide rapidly and can convert into any type of cell. So here the embryoblast contains the stem cell which divides and redivides to form the other types of cells. So the ectoderm, mesoderm, endoderm, they all form from that is the embryoblast. So here the caudal region of the caudal region, that is cephalic region,
and the embryonic disc proper, this is caudal region divides and redivides and forms an elevation. And this elevation is called as the primitive streak. That elevation is called as the primitive streak. And from that is primitive streak, the cells migrate into the that is middle region in between that is the upper layer and lower endoderm. So in this way, the mesoderm is formed. Are you understanding or not? So let me narrate briefly. ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏମ୍ବ୍ରିଓବ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଅଛି। ये स्टेम सेल कौन करिवो डिवाइड रिडिवाइड करिके एनी अदर टाइप ऑफ सेल को कन्वर्ट होबो। तो फास्ट जतले खाद्य पाइबो सेतले ए जो एम्ब्रियोब्लास्टटा दिभाग हे जिवो। ऊपरटा हबो दैट इज एपिब्लास्ट, तळटा हबो हाइपोब्लास्ट। तळटा हबो कॉलम दैट इज क्यूबिडाल सेल, ऊपरटा हबो कॉलमनार सेल। ता ऊपर गोटे कैविटी देखा हबो ताकू कहंती एमनियोटिक कैविटी। ता ऊपर जो गुटे लेयर सेल रहबो ताकू कहंती एमनियोजेनिक सेल। तापरे एति चली गला। तापरे एई समय कोन हला ना ए जो ट्रोफोब्लास्ट रो मेजोड गुटे सेल डिवीजन है कि मझिरे किछि सेल तयारी हो ताकू कहंती एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर। सेटा दीटा लेयर हे जिवो। बाहर लेयर ता हे जिवो दैट इज द बाहर जो लेयर ता हे रहिबो से बाहर लेयर ता को कहै जिवो दैट इज प्लैंक्टोनस प्लूरिक मेजोडर एंड दैट इज द सोमाटोप्लूरिक दैट इज कॉल्ड एज द आउटर ता कहै जिवो दैट इज सोमाटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर आ भीतरटा को कहै जिवो स्प्लैंक्टोनोप्लूरिक मेजोडर। बाहरटा को कहै जिवो सोमाटोप्लूरिक मेजोडर आ भीतरटा को कहै जिवो स्प्लैंक्टोनोप्लूरिक मेजोडर। दैट इज सोमाटोप्लूरिक एंड प्लैंक्टोप्लूरिक दैट इज सोमाटोप्लूरिक एंड स्प्लैंक्टोनोप्लूरिक मेजोडर कहै जिवो। तापरे एतिका बेले कोन हबो ना फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म हबो। प्रथमे एंडोडर्म तयारी होय एठी कोन हबो ना ए जो हाइपोब्लास्ट अच्छी से हाइपोब्लास्ट मार्जिन सेल रु आस्ते आस्ते सेल गुड़ाक डिविजन करके एनसार्कल हम जस्ट बिलो द ट्रोफोब्लास्ट एमती मिसीज मिसीगले से कहती दैट इज द एंडोडर्म ट्यूब। से एंडोडर्म ट्यूब रु दीटा स्ट्रक्चर बाहर जी पोर्सन ये रही किए ना ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट ना ये जो ब्लास्टोडिस्क तले रहा सेटा हम दैट इज द एम्ब्रियोनिक गट बा एटा एलिमेंटरी कैनाल तैयारी कर आउ जो रेस्ट यही परिमाणटा रहीगला एटा तैयारी करिवो यक सेक। प्रथमे जो यक सेकटा हबो सेटा बड़ हबो कारण सेतलकु ए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मटा तैयारी हेइ निथिवो। तापर एटा छोटो हे जिवो। छोटो हे गेले ताकू कहा गला सेकेंडरी दैट इज द यक सेक। एटा प्रथमे बड़टा प्राइमरी यक सेक, छोटटा होछि सेकेंडरी यक सेक। छोटटा हे गेले सेकेंडरी यक सेक त कहा जिवो। आउ ए सेकेंडरी ए यक सेकटा ह्यूमन केस रे एटा एते इंपोर्टेंट नुहे किंतु एटा इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखौछि जे वी आर कनेक्टेड विथ द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कारण तांकर यक सेकटा प्रोमिनेंट अछि। आमे सही ग्रुप रो डेवलप करछे आउ आम भितरे एटा यक नथिवो एठी दैट इज जे फ्लूइड थिवो। एटी यक सेक रे कोन थाय सेतिरे एटी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करे डाइजेशन करके फूड मटेरियल ता से ग्रोइंग एम्ब्रियो को जुगेबा कथा किंतु एठी हमर एटा रहिला एटा हमर फ्यूचर रे कोन करे ना ब्लड सेल तयारी करे अप टू 6th वीक पर्यंत तयारी करे हला। तापरे एंडोडर्मटा हाइपोब्लास्ट चली गला परे जतिको ब्लास्टोडिस्क रे रीजन रहिला ताकू कहा गला एम्ब्रियोनिक डिस्क। ताकू कहा गला एम्ब्रियोनिक डिस्क। ए एम्ब्रियोनिक डिस्कटा प्रथमे एमति थिबो। ए एम्ब्रियोनिक डिस्क रे डिवीजन रिडिवीजन हे कि एटा तीनटा रीजन ले भाग हो। तीनटा रीजन सेफालिक रीजन माने हेड रीजन, एटा होची बॉडी मिडिल रीजन, एटा होची कोडाल माने तळ। एटी सेल गुडा को डिवीजन रिडिवीजन हे कि एटी गोटे प्रोजेक्शन हबो बा एलिवेशन हबो। एटा कहते प्रिमिटिव स्ट्रिक। ए प्रिमिटिव स्ट्रिक सेल गुडा को डिफरेंशिएशन है कि ये दीटा मझी लेयर मझी रे कि पास करिवे। एटा एपट चलिवो सेटा सेपट चलिवो एंड इन फ्यूचर इट विल कम दी मेसोडर्म। ए सेल गुडा का अरेंज हेजिवे मेसोडर्म। आउ रहिला दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। एम्ब्रियोब्लास्ट रो मेसोडर्म चली गला परे आउ जतिक सेल रहिला इट विल कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। इट विल कन्वर्ट इनटू एक्टोडर्म। सो इन दिस वे 3 germ layers are formed: endoderm, mesoderm and ectoderm. एंडोडर्म ता तयारी हला हाइपोब्लास्ट रु आउ ए जो मेसोडर्म ता आउ दैट इज द एक्टोडर्म ता जो सेल रहिला जतिको दैट इज एम्ब्रियोनिक डिस्क सेइतरु तयारी हला जे मेसोडर्म ता चली गला परे जे जो सेल ओडा रहिला सेइता तयारी हला ectoderm. Clear? So this is all about the formation of that is endoderm, mesoderm and ectoderm. तापर हमें देखिबा that is the fate of that is the ectoderm, mesoderm, endoderm. एटा केतळे तयारी हबो
ना एटा ऑर्गेनोजेनेसिस रे हुए एटा हमर जदियो कोर्स रे नाही तथापि आमे टिके जानिबा जे को स्ट्रक्चर गुडा को आम बॉडी रे को स्ट्रक्चर गुडा कोटी कोटी तेणु फास्ट जिनस होची आमे जो डेवलप करचे वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कारण आमर ए तीनटा लेयर प्रथमे आसे आमे तो डेवलप हो आमर ए तीनटा लेयर प्रथमे आसे एक्टोडर्म मेसोडर्म आउ एंडोडर्म सो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो एनिमल माने ए तीनटा जर्म रे डेवलप करंती से मान को कहा गला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो माने डीटा जर्म जेडा हाइड्रा जर्म लेयर रहंती से माने हले डिप्लोब्लास्टिक किंतु ताकर से डीटा जर्म लेयर हे के रहि गला एक्टो दैट इज आउटर वॉल एंड इनर वॉल सेठी आ ऑर्गन तयारी हला नाही किंतु एठी हमर सब डिफरेंट ऑर्गन हार्ट ब्लड एमती सब तयारी हे जिवो किडनी फिडनी तेणु ए ऑर्गन एगुडा को तयारी हबो तेणु आमे प्रथमे देखिबा जे को लेयर रो को ऑर्गन गुडा को तयारी होची फर्स्ट आसीबा एक्टोडर्म तापर होची मेसोडर्म तापर होची एंडोडर्म आमे इंपोर्टेंट जिंस कहबा एक्टोडर्म रो के तयारी होची ना एपिडर्मिस हमर जो स्किन रो ऊपर लेयर दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म दैट इज एपिडर्मिस सेटा तयारी हला ओ एपिडर्मल ग्लैंड जते ग्लैंड अछि एपिडर्मिस रे जते ग्लैंड सेगुडा के तयारी हला आउ कोन हला ना टोटल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जेडा सब सेडा को तयारी होची एक्टोडर्म रो आउ कोन तयारी होची ना पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन तळे जो अछि पिट्यूटरी ग्लैंड आउ दैट इज पिनियल ग्लैंड आउ एड्रिनल ग्लैंड आउ मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऑफ द आई कंजक्टिवा आई लेंस एक्सेट्रा एगुडा का सब स्क्लेरा एगुडा का सब तयारी होची कोटो ना दैट इज फ्रॉम द एक्टोडर्म आउ देन एनामेल ऑफ टीथ हमर जो दांत ऊपर जो दैट इज व्हाइट एंड हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी सेटा तयारी होची एक्टोडर्म रो आउ कोन होची ना दैट इज सैलिवरी ग्लैंड दैट इज आउ दैट इज द मामारी ग्लैंड ए जो ब्रेस्ट तयारी होची सेटा भी एक्टोडर्म रे होची आउ दिस आर द मेजर पार्ट व्हिच आर formed from the ectoderm. Then after you come to the mesoderm. Mesoderm ro kon tiyari hochi most important structure that is all the connective tissue that is the muscles that is the connective tissue like the bone cartilage blood एवडा का सब तयारी होची mesoderm रो हार्ट तयारी होची किडनी तयारी होची सब mesoderm रो तयारी होची आउ कोन होची ना that is blood vessel तयारी होची mesoderm रो हला आउ मसल सब तयारी होची mesoderm रो डेंटाइन ऑफ टीथ दांतर जो मझी पोर्शन ता द डेंटाइन सेटा भी ए मेसोडर्म रो तयारी होची सो दिस इज ऑल दैट इज द फ्रॉम द मेसोडर्म ए किडनी दैट इज टेस्टिस ओवरी एवरीथिंग देयर इज फ्रॉम द मेसोडर्म देन द एंडोडर्म रो तयारी कोन होची ना एपिथेलियल लेयर ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल एंड द लंग्स ट्रैकिया ब्रोंकस एगुडा सब आ यूरिनरी ब्लडर दिस आर द दैट इज फ्रॉम द एंडोडर्म आउ कोन तयारी होची ना दैट इज द दिस आर द एंडोडर्म एगुडा सब तयारी होची तापरे हमें देखिबा दैट इज टिम्पानिक मेम्ब्रेन जोटा कान मझी रे गोटे पर्दा अछि सेटा तीनटा जाक लेयर रो तयारी होची एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तापरे हमें देखिबा दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दैट इज द मेम्ब्रेन लास्ट पोर्शन दैट इज यू कम टू द लास्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म we know that is the vertebrates are of 5 classes main 5 classes that is the fish then the amphibians then the reptilians then the mammalians and then the apes so there are 5 but the fish and the amphibians the fish and the amphibians the fish and that is the amphibians that is here the fish and amphibians they grow or the early development occurs in the water they lay egg in the water जतले वाटर से माने अंडा दउचंती तेनु ता चारि पटे वाटर रहउची तेनु वाटर ताको कोन करची ना ताको मॉइस्ट रखुची प्लस प्रोटेक्शन दउची एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करूची सब करूची किंतु in case of the terrestrial animal that is called as the reptiles and the birds and the mammals यांकर डेवलपमेंट आउटसाइड द वाटर होची तेनु एठी एई सब जिनिस प्रोटेक्शन दउची आउ मॉइस्ट रखुची उदालिया रखुची एक्सचेंज करूची ए सब कोनसा ए सब जिनिस को करिवा पई गुटा स्ट्रक्चर तयारी होची that structure is called as the extra embryonic membrane a extra embryonic membrane रो मेन होची
एमनियोटिक कैविटी एंड से अनुसार एनिमल ग्रुप को दी भाग विभक्त कराई एमनियोटा एंड एनएमनियोटा एमनियोटा माने जो मानकर एमनियोटिक कैविटी रहिला से हला दैट इज के ना बर्ड रेप्टाइल एंड मामल जो मानकर नाही से मानले फिश आउ एम्फिबियंस दे आर एनएमनियोटा हमें होची एमनियोटा तेणु देखिबा जेठी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अछि से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ता कोन कोन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ता कोन कोन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोन कोन आउ सेटा कोउट कोउट तयारी हेछि दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membrane. Then the extra embryonic membrane consists of that is the four structure that is chorion, amnion, this is the embryo, and this is allantois, and another is called as the yolk sac. So these membranes are mainly that is the developing from that is outside the embryo, but it is from that is both the embryoblasts. So the extra embryonic membrane which is formed and differentiated into two layers. That is outer is somatopleuric extra embryonic membrane and inner is that is splanchnopluric extra embryonic mesoderm. So it is differentiated into like this. Here it is differentiated into like this. So first of all, that is the chorion is the outermost covering of the embryo, which is formed by the trophoblast, outer trophoblast, and inner that is somatopleuric extra embryonic mesoderm. It forms the chorion. What is the function of a chorion? The chorion forms the chorionic villi at the time of a placenta formation. So it helps in formation of a placenta. It forms the formation of a placenta. Placenta बुझी पड़छ फूलो जो फूलोटा पड़े छुआटा जन्म हो सारा पर जो फूलो पड़े ता कहते प्लासेंटा ए प्लासेंटाटा तयारी हला दीटा कोतरु मार किछि टिश्यू आउ दैट इज ये एम्ब्रियो रो किछि टिश्यू एमती गुटे इंटरमिंगलिंग स्ट्रक्चर करके तयारी कला जाय थरु ब्लड रु खाद्य पदार्थ सब छुआ कति सप्लाई हबो. So this is that means the outer membrane is called as the chorionic membrane, extra embryonic chorionic membrane. It is formed by the outer trophoblast layer and inner somatopleuric extra embryonic mesoderm. So this forms the outer and it helps in the formation of a placenta as the chorionic villi, etc. Then the second that is called as the amniotic membrane. This amniotic membrane is formed by the outer trophoblast, the inner trophoblast. That is, the amnion is formed just above the embryo, composed of the amniogenic cell of the trophoblast. This is amniogenic cell of the trophoblast, and this is the somatopleuric extra embryonic mesoderm, and it combinedly forms the amniotic or amnion. That amnion, it is filled with the fluid that is called as the amniotic fluid, and it protects the embryo from the external shock, and it keeps the embryo moist. That means it prevents the desiccation and the infection, and it maintains the constant pressure, etc. So this is called as the amniotic cavity, or the amniotic membrane. The amniotic membrane is just
that is the outer to the just it is a covering outer to the embryo and it protects mainly prevent the desiccation माने सुखित दब नाही द्वितीय रे कोन करिवो act as a protective cushion कोन से आघात हेले एटी फ्लूइड अछि से आघातटा एब्जॉर्ब करिवो छुआ ऊपर आसी के परे कोन करिवो आघातटा कम पड़िवो तापरे कोन करिवो कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर ताको मेंटेन करिवो आउ कोन करिवो ना दैट इज परमिट द फीटल मूवमेंट ए जो एम्ब्रियोटा डेवलप मूवमेंट करिवो ता भितरे एटा होची फ्लूइड इट इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक फ्लूइड या भितरे अछि एटा हला एमनियोटिक मेम्ब्रेन जोटा प्राइवेट पॉन्ड भलिया एटा काम करूची तापरे आसीबा काको ना तापरे आसीबा एलॉन्टॉइस कोथरे तयारी ना दिस इज द एंडोडर्म and the inner that is splanchnopluric mesoderm एटा ए दीटा कोन करिवो ना एटा तयारी करची दीटा मिसी की करिवो एलॉन्टॉइस ए एलॉन्टॉइस कोन करिवो ना इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लासेंटा इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा बाय फॉर्मिंग द ब्लड वेसल ये कोन करिवो ब्लड वेसल तयारी करिवो तेनो प्लासेंटा जो कोरियन की भिली भीतर को जो ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल जीवो दैट इज कॉल्ड एज द that is called it called the placenta that is the blood vessel ताने यक सेक ता blood vessel तयारी कला ता माने ए that is placenta को एमिति गोटे कॉर्ड लागिवो एम्ब्रियोनिक एटा को कहंती फ्यूचर रे एटा कहंती that is umbilical cord तार द्वारा सब ब्लड कोन करिवो ना आसीबो छुआ कतरु एठी की आ एठी तो अछि कार मा ब्लड एठी एक्सचेंज होबो सब्सटेंस ता पर पढिबा यक सेक it that is inner margin is endoderm that is yolk sac allantois it is sac like structure which is embryonic near yolk sac similarly that is yolk sac is composed of that is the endodermal layer as well as the that is the splanchnopluric mesoderm ए जो yolk sac ये कोन करूची ना हमर एटा वेल डेवलप नुहे एटा रिड्यूस्ड फॉर्म रहिची आ एटा जणौची जे आमे रेप्टाइल कोतरु बढ़ीचे एटा होची वेस्टिजियल ऑर्गन भलिया काम करचे एटा आउ साइंटिस्ट कहउचंती जे एटा 6th वीक पर्यंत एटा ब्लड सेल तयारी करूची एटा ब्लड सेल तयारी करूची अप टू 6th वीक हला देन तापरे लिवर फीवर एमाने स्प्लीन एमाने सब तयारी करबे तापरे बोन मैरो तयारी करबो तेनो एटा हला दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा embryonic membrane so up to this that is the and into the next class I will start the pregnancy